Hello, students. Namaste and welcome back. Let's start our lesson 33. The title is Pata hai. I repeat, Pata hai. A question, so the tone is different. English translation, do you know? Now, you may ask, why do we translate Pata hai as do you know? We have already done two versions of the verb to know in Hindi. Let's discuss them. The first one, को जानना. को जानना we use when we say I know someone or a person. Example sentences. मैं राम को जानता हूँ. I know Ram. राम मुझे जानता है. Ram knows me. Alright? The second one is को आना. Also to know, but to know a skill or to know how to do something. Example sentences. मुझे हिंदी आती है. I know Hindi. मुझे तैरना आता है. तैरना. To swim. I know how to swim. राम को हिंदी आती है. Ram knows how to speak Hindi. Alright? Now, को पता होना. The third version of the verb to know in Hindi is for the facts. To know a fact. Let's see example sentences. क्या तुम्हें पता है? Do you know? कि that ये थैला, this bag, किसका? Whose? Do you know whose bag this is? Alright? मुझे पता है कि तुम should not be there. कि तुम कहाँ हो? I know where you are. Alright? I know where you are. मुझे पता है कि तुम कहाँ हो. Alright? Now, मुझे पता है. मैं with को पता है. तुम्हें पता है. तुम with को पता है. और को पता होना. उसे पता है. He knows. इसे पता है. उसे पता है. He or she knows. इसे पता है. He or she knows. We know the difference. I hope I don't have to explain it again. आपको पता है. You know. हमें पता है. Here we are conjugating को पता होना with all the personal pronouns. इन्हें पता है. They know. उन्हें पता है. Also, they know. Alright? Now let's go to the lesson story and let's see what's happening in this lesson. So, in this lesson you will see that our foreign delegates, our guests from abroad, are discussing with the school students. They are responding to their curiosities and testing their knowledge about other countries. So here in this conversation happening between the foreign delegates and the school students, you will see the use of ko pata hona. Alright, now let's go to the lesson. Let's read the sentences and then we will discuss the structure, new words, and the grammar in these sentences. आप लोगों को पता है. आप लोगों को पता है हम कहाँ से हैं. आप लोगों को पता है
हम कहाँ से हैं? आपको पता है वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको पता है आपको पता है वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। हमें पता है कि बर्लिन जर्मनी में है। हमें पता है कि बर्लिन जर्मनी में है। आपको बहुत कुछ पता है। आपको बहुत कुछ पता है। I repeat, आपको बहुत कुछ पता है। Now let's read them again once more. आप लोगों को पता है हम कहाँ से हैं? आपको पता है वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? हमें नहीं पता। हमें पता है कि बर्लिन जर्मनी में है। आपको बहुत कुछ पता है। Now, let's discuss these sentences. Let's continue our lesson. In the first sentence, there are two questions. So basically, there are two sentences, but sometimes I do that to save some space. Let's read them. The first one is, आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है हम कहाँ से हैं? आप लोगों को पता है? आप लोगों को is oblique form of आप लोग, you guys. With को it changes into आप लोगों को. Oblique form, we have done this so many times. आप लोगों को पता है, do you guys know? हम कहाँ से हैं? कहाँ is where. कहाँ से from where. And हम कहाँ से is where we are from. Do you guys know where we are from? Alright. Second sentence. आपको पता है वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको पता है वहाँ is there. कहाँ is where? वहाँ is there. कौन सी भाषा बोलते हैं? Do you know वहाँ there कौन सी is feminine of कौन सा. कौन we have done who. If we add sa, it is which. Feminine is si. कौन सी. Masculine plural कौन से. And feminine plural also कौन सी. कौन सी भाषा. भाषा is a feminine noun. Language. This consonant here is similar to sh. Pronounced also sh. आपको पता है वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? Do you know which language is spoken there? And the third sentence is हमें नहीं पता. We don't know. Negative sentence. मुझे नहीं पता. I don't know. तुम्हें नहीं पता और आपको नहीं पता. You don't know. इसे नहीं पता और उसे नहीं पता. He or she does not know. हमें नहीं पता. इन्हें नहीं पता. उन्हें नहीं पता. Simple. हमें पता है. We know that कि बर्लिन जर्मनी में है. We know that Berlin is in Germany. आपको बहुत कुछ पता है. बहुत कुछ पता है. आपको बहुत कुछ पता है. बहुत is very. कुछ is some. बहुत कुछ together is a lot of or quite a lot. आपको बहुत कुछ पता है. Someone is complimenting the students and he or she saying, guys know a lot of things. आपको कुछ नहीं पता. Negative.
कुछ is something or some. कुछ नहीं पता. You don't know anything. आपको सब कुछ पता है. सब कुछ everything. You know everything. Alright. Now let's check the other parts of this chapter. Well, there's not much here. Let's read these example sentences. I have divided them according to the verbs को पता होना and को आना. Let's read them. उसे यहाँ कोई नहीं जानता. कोई नहीं, no one. Indefinite pronoun. कोई is someone. कोई नहीं, no one. कोई नहीं जानता, no one knows him here. Alright? मुझे कोलकाता में हर कोई जानता है. हर कोई is everyone. We have done this. हर कोई जानता है. Everyone knows me in Kolkata city. कोई नीता को जानता है. Does someone know Neeta? Neeta, a person. कोई, someone. Does someone know Neeta? Now, sentences with को पता होना. क्या राजू को नीता के बारे में पता है? के बारे में, postposition, about. मेरे बारे में, about me. तुम्हारे बारे में, about you. राम के बारे में, about राम. इनके बारे में, about them. हमारे बारे में, आपके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में. You can make combinations. Alright? क्या राजू को नीता के बारे में, does Raju know about Neeta? आज, today, राष्ट्रपति, राष्ट्र is country. Sanskrit word for country. In Hindi, the word is Desh. We have done this. We have also done Videsh, foreign country. Rashtra and Pati. Pati is husband or owner. Rashtrapati. The president is coming to Kolkata today. तुम्हें पता है? Do you know? हमें पता है कि तुम वहाँ क्यों हो. We know that why you are there. क्यों is why. Alright? मुझे हिंदी आती है. I know हिंदी. उसे कुछ नहीं आता. He knows nothing. इन्हें तैरना आता है. They know how to swim. So that's all for this chapter. You can reread these sentences and try to understand them again. Rewatch this video. I will see you in the next